इस बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अंजनी बाबू, हमारे बड़े भाई और बिहार को बहुत सालों तक संभालने वाले अमीर सुबानी साहब, सलमान अख्तर साहब, जिनके बारे में थोड़ी बातें करूंगा और जिस विषय पे हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं, सलमान अख्तर साहब बातचीत करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इशारा करूंगा कि हम लोग किस तरफ बातचीत को लेके जाएंगे। आज हॉल में जब देख रहा हूं तो शहर में जो लोग भी बौद्धिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैचारिक गतिविधियों में शामिल लोग हैं, ख़ास लोग हैं, पहली पंक्ति में पांगते जो लोग हैं, सब यहाँ उपस्थित हैं। 1.25 लाख पे एक को लड़ाऊंगा, तो एक लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये संतोष की बात है कि सभी 1.25 लाख को के बराबर के लोग हैं। तो अगर हॉल थोड़ा भरा कम है, बावजूद इसके ये संतोष हो रहा है कि हॉल में हु इज़ हु वाली लिस्ट में शामिल लोग हैं। अरुण कमल जी ख़ास तौर से इन्होंने अपना प्रोग्राम बदला, हैदराबाद से कई यात्राएं करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आज यहाँ उपस्थित रहें। इसके लिए उनका मैं ख़ास तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। यह कार्यक्रम आज जो यहाँ हो रहा है, पाटल बहुत छोटी संस्था है और 2 सालों से हम लोग कुछ वैचारिक विषयों पे, जैसे इसके पहले हम लोगों ने मेटा मॉडर्निज्म पे एक कार्यक्रम किया था, उसके बाद फिर एक ज्योतिष जोशी की किताब है आधुनिक कला आंदोलन, उस पर हम लोगों ने बातचीत की थी। अशोक जी वक्ता थे उसमें और अशोक भौमिक आए थे दिल्ली से, जो खुद एक पेंटर हैं और उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं कला को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक, तो हमारी कोशिश रह रही है कि सिर्फ किताबों पे बातचीत सिंपल या फिर कविताओं का पाठ, ऐसी चीज़ों पे हम न बात करें, हम वैचारिकी पे बात करें। सबसे बड़ी समस्या हमारे समय की यही है कि हम दर्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम विचारों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा कर रहे हैं जहाँ जिसके मन में जब जो आता है वो दर्शन बघार कर चला जाता है और वो दर्शन वायरल हो जाता है। उस वायरल दर्शन ने बहुत संक्रमित किया है हमारी पीढ़ी को और इस पर बात होने की ज़रूरत है, चर्चा होने की ज़रूरत है। और हम इन चीज़ों को अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे, फिर साझा करेंगे, ताकि आज की जो बात है वो यहीं ख़त्म ना हो, आगे भी चलती चली जाए। सलमान अख्तर साहब का परिचय, सवाल ही उठता है कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। मेरा ख्याल है कि पूरा एक दिन कम पड़ेगा अगर इनके बारे में बातचीत की जाए तो। लखनऊ में जन्मे, लखनऊ में पढ़ाई हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS किया, PGI चंडीगढ़ से जाकर MD सेक्रेटरी किया। फिर बहुत सारे वजहें इनके पास हैं कि ये क्यों विदेश गए। कुछ बातें बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। जो 30 रीजन्स हैं उसमें एक कहते हैं कि यहाँ छिपकली बहुत है, वहाँ अमेरिका में छिपकली नहीं मिलती है। आप लगा सकते हैं कि सलमान अख्तर क्या चीज़ है और अपनी बात को कैसे कहते हैं। और जब ये एक वजह गिनाते हैं तो इनका इशारा एक फोबिया की तरफ होता है, खौफ, डर। और अब सिर्फ इस पे अगर बात हो तो सारे दिन बात हो सकती है कि कोई इंसान एक छिपकली की वजह से जाता है, वो छिपकलियां कहाँ कहाँ, कल्चर में कहाँ हैं, पॉलिटिक्स में कहाँ हैं, जीवन में कहाँ है, समाज में कहाँ है। तो सलमान अख्तर कुल मिलाकर के एक इंसान है जो हमारे बीच बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक मेटाफोरिकल इंसान है। ये जितना है उससे ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग। हम जो सुनेंगे वो भी टिप ऑफ आइसबर्ग ही होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो 114 किताबें कैसे पैदा होती। तब कोई भी इंसान का दिमाग, मैं कहता हूँ हमेशा अपने बारे में कि भाई कैसे किताब आती है, मैंने कहा पता नहीं कौन चीज़ प्रेग्नेंट कर जाती है और किताब पैदा हो जाती है। मैं सोचता हूँ इनके ऊपर कि इनकी प्रेगनेंसी की कितने टॉर्चर से गुजरे होंगे। 114 किताबों के बारे में हम लोग इस पर बात भी करते रहते हैं। और किताबों का भी दायरा ये कि जब लिखने बैठे तो लगभग 30-35 किताबें अकेले की लिख डाली और सब में एक नई बात, ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, फ्राइडे लॉन्ग एंजेस,
जितने आप अच्छे इमोशंस की बात करें, बुरे इमोशंस की बात करें, माइग्रेशन पे बात करें, क्योंकि माइग्रेशन पे 2 किताब है, एक किताब के बारे में पूछा कि 2 किताबें क्यों आपने लिखी, कहा कि एक दूसरों के बारे में प्रोज है, एक अपने बारे में पोएट्री है। किताब प्रोज की है लेकिन वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस अंदाज में, यानी इमोशन कहाँ पे थोड़ा सख्त हो करके, प्रैक्टिकल हो करके प्रोज में ढल जाता है, इमोशन कहाँ पे पानी की तरह टप 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 बह जाता है, और वो सारी चीज़ें लिखे में आती है। सलमान अख्तर साहब जब लिखते हैं तो इनकी एक बड़ा खूबसूरत वाक़या, आपको मज़ा आएगा कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो इनके एक टीचर ने कोई अंग्रेज़ी कोई चीज़ लिख रहे थे, तो किसी टीचर ने कहा कि तुम ज़िंदगी में कभी अंग्रेज़ी नहीं लिख पाओगे। और याद करते हैं उनको, कहते हैं कि काश 114 किताबें वो उनको देते, कहते आप उठा के घर लेके जाइए, देखिए कि आपके शागिर्द ने क्या किया है। दुनिया भर के ऑथर्स कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। एक किताब हम लोगों ने मिलके एडिट की है, एक किताब हम लोग मिलके एडिट कर रहे हैं। तो वो किताब के चैप्टर्स ऐसे बनते हैं कि जैसे लोग कह सकते हैं कि बातचीत में लोग बड़े चित्रकार रेखाएं खींचते हैं, अच्छा इसमें किताब कैसे बनेगी 10 मिनट के अंदर, अच्छा इसमें ऐसे चैप्टर ऐसे चैप्टर ऐसे चैप्टर, यार इसमें ऐसे डाल देंगे तो हो जाएगा। तो ये इस लेवल की का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बहुत रेयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इसके अलावा पोएट्री अंग्रेज़ी में उसी तरीके से, हिंदी में उसी तरीके से। इन्होंने मुझे कई चीज़ें, मैं इनसे मुझे सीखने का मौका मिला। ख़ास तौर से जो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से आज ये बातचीत हो रही है, वो ये कि आप पोएट्री जब करते हो तो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है उसको पोएट्री में ढाल देते हो, लेकिन अनकॉन्शियस में डाइव नहीं अगर कर सकते, पोएट्री नहीं कर सकते। मैं इनकी शागिर्दी में अनकॉन्शियस में डाइव लगाना मैंने सीखा, और अब डूबता नहीं हूँ, निकल भी पाता हूँ। शायद उस्ताद का ही असर है और उनकी ही तौफीक है कि मैं ये कर पाता हूँ। सवाल ये है कि ये बातचीत आज हम लोग म्यूज़ियम और माइंड के रिलेशनशिप पे क्यों कर रहे हैं और कैसे ये आइडिया आया। हम लोग बहुत सारे टॉपिक से व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बातचीत करते करते हम लोग यहाँ पे पहुँचे। कुछ इनका सजेशन, कुछ मेरा सजेशन आया। फाइनली इन्होंने कहा कि नहीं, टॉपिक ऐसे होगा। मेरे मन में भी यही सुनने का मन था और मैंने इसीलिए कुछ इसकी तरफ इशारा 2-3 संकेत दे के मैंने किया था। और तब ये बात बनी थी कि हुआ ये था कि इस म्यूज़ियम में जो सबसे हॉटेस्ट, जिसको कह सकते हैं स्कल्पचर है, यक्षिणी की मूर्ति, वो जब यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही थी, मैं उस मूर्ति को 40 सालों तक देखता रहा था उस म्यूज़ियम में। जाने कितनी बार हॉल नंबर 1 के दरवाजे पे खड़ी सी, बस पीछे एक पूरा ख़ानदान बौद्ध देवताओं का, उसमें मैत्रेय और सब। लेकिन जब वो मूर्ति यहाँ आ रही थी तो बहुत शहर में विरोध की बातें हो रही थी। लेकिन मैं उस इंटरनल माइग्रेशन की बात सोचने लगा और पहली कविता उस पर हुई, और उसके बाद पूरी की पूरी सीरीज, और वो किताब पॉपुलर हुई, 3 एडिशन आए, उस पर प्रेज हुए दिल्ली में, पटना में। और तब से ये चीज़ मुझे लगातार हॉन्ट करती रही, क्योंकि इस जो यक्षिणी जो किताब है, इस किताब में माइंड है और म्यूज़ियम है। कौन सा माइंड? वही माइंड जो म्यूज़ियम के भीतर फैला हुआ है। उसमें यक्षिणी को जब विदेश ले जाने का प्रसंग आता है तो सारी मूर्तियाँ, वो पेड़ और बुद्ध और मैत्रेय और कुर्किहार, ब्रोंजेज, सब के अपने अपने रिएक्शंस हैं। यानी वहाँ जो स्कल्पचर, जितनी चीज़ें रखी हैं, एक एक चीज़ें जो वहाँ रखी गई हैं, सब हमसे बातें करने लगते हैं। विजय चौधरी जी एक बार, इन्होंने प्रागैतिहासिक कुछ चीज़ें थीं, मेरा ख्याल है 3000 साल 4000 साल पुरानी चीज़ों की एक प्रदर्शनी लगवाई थी। मेरी बेटी ने इनसे पूछा था कि ये सब क्यों लगा रखा, छोटी सी थी। उन्होंने कहा इसको हाथ में उठाओ, सोचो कि इसको 3000 या 4000 साल पहले के इंसान ने छुआ होगा, अब तुमको कैसा लग रहा है? तो कहा हाँ अंकल, बहुत डिफरेंट लग रहा है। ये जो डिफरेंट फील है, ये क्या है? यही है हमारा माइंड हमारे म्यूज़ियम में सजा हुआ है, और हमारे भीतर वो भी एक म्यूज़ियम है, सभ्यता का सारा म्यूज़ियम। अनकॉन्शियस में सब कुछ हमारे भीतर है। लेकिन मैं यहीं कह के रुकना चाहूँगा। इसके आगे जो कुछ कहा जाना है और जैसे कहा जाना है, न वो मेरी लियाकत है, न मेरी हैसियत है, न मेरी कुव्वत है।
और न मेरे पास वो ज़बान है जिसमें उन चीज़ों को मैं कहूँगा। सलमान साहब ने बातचीत के, जब हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कौन सा किस ज़बान में बात करूँ, अंग्रेज़ी में करूँ, उर्दू में। हमने कहा आप जब साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में साइको एनालिसिस पढ़ा रहे होते हैं तो बीच बीच में उर्दू का शेर कहते हैं, फिर कहते हैं तौबा तौबा ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर वो करते हैं। तो यहाँ तो आप आराम से आप दोनों ज़बानों में आवाजाही कर सकते हैं। इस सेटिंग के साथ अब मैं गुजारिश करूँगा सलमान अख्तर साहब से कि हमारे बीच आएँ और हमें अपने अजायब घर से मिलवाएं, और इस अजायब घर में हम जो फैले बिखरे हैं अलग अलग कल्चर्स में, उससे हमें मिलवाएं। The patient is lying on the couch. It's a Thursday afternoon, 3:30. There's pin drop silence in my office. This is a woman, 35 years old. She's on the couch. I'm sitting behind the couch. The patient is utterly silent. The patient has not said one word. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes pass. I have a strange thought. I have a thought, is this patient alive or dead? So I find myself that I raise myself a little bit from my chair and try to see. And I can see her abdomen moving up and down with breathing, which reassures me that she is alive. I sit back. Time is going. The patient is not saying anything. As the patient is lying there quiet, an old memory comes in my mind. When I was 8 years old, there was a school trip, and they said, little children holding their hands, the teacher is coming with us. Children, we are going for a trip to the museum of the city, and we will see the museum today. So we were all very happy. The word that you used was used then, Ajaib Khana, a place for curious items, Ajaib Khana. I had heard that there is an Egyptian mummy in that museum. And I, as a little boy, was extremely excited about seeing that mummy. Now we go to the museum, they take us to one room, there's no mummy in that room, they're showing something else. Then they take us to another room, and I'm getting restless. I want to see the mummy. Then they take us to another room. Ultimately, we walk in the room, and the teacher says, in this room is the mummy. And what turns out is there's a big table. On the table, there's a wooden box with glass top and glass sides. Inside is a cloth-wrapped mummy. I was so disappointed. I was thinking, okay, I'll go, I can play with the mummy, touch the mummy, and something. And the mummy was not even visible, not 1 inch of her skin. She was wrapped in a cloth, put in a box, the box was closed. I was so hurt and so upset. As I'm having this memory while the patient whom I'm treating is lying completely quiet, the memory of this disappointment came to my mind. And the memory of an old dead body came to my mind. I'm going to leave this story here. And I'll come back to this story towards the end of my talk. But I want you to keep it in mind. Because it is a good idea to begin something with facts. So I'll first state some facts. But even before that, I want to thank Dr. Vinay Kumar, the directors of the museum, who have invited me here, given me the opportunity, and for you to come and listen to me. Some of you have just arrived from another city, so some of them may be tired, but you are here. Thank you. Let's start with facts.
Now, obviously, for senior people who are involved in the museums, these might appear extremely childish and silly to state. But I have found in life that it is never a bad thing to start on surface and start with elementary facts so that we common ground of reality established. So first, museum. The word museum is derived from Greek language, where the original word for the museum was museon, not M at the end, not M, but N, museon. And museon was supposedly a sacred chamber for the goddesses, individually called muses, which spurred creativity. A place where these goddesses or semi-deities could be appearing, muses, just like I'm a muse for Vinay is a muse for me. So muses, people who become a source of excitement and mobilization of our creativity. Invite us, give us faith, give us courage, and stir us up in a way that ends up in a creative product. The house of muses was called museon, and then gradually it moved to German, to English, and then acquired the more current thing, museum. It was actually museon. That's one thing. Second, there is a definition of museum. Not every place can be called a museum. United States, where I live, does not have an official definition. But England has an official definition. Germany has an official definition. Above all, there's a, like UNO or like WHO, there's an international organization called ICOM, International Committee on Museums. They have a definition. And in that definition, the following points are: the museum is a physical space that is permanent. That is not run for profit and money making. That contains objects, whether the objects are paintings, sculptures, and other kinds of historical artifacts of history, art, science, nature, archaeology, and many other subspecialties. A museum is a space that is permanent, that contains articles from various disciplines for the purposes of acquiring them, restoring them, preserving them, exhibiting them, and interpreting them. That place is called a museum. There are many types of museums. There are museums of art, there's museum of history, there's museum of natural history, there's museum of zoology, botany, etc., etc. We can divide the museums according to the subjects they contain. We can divide the museums according to big and small. We can divide the museums according to eras in history. We can perhaps also divide the museums into thematics, which part of history and why, what audience they're intended for, and so on and so forth. And then many, many nosologies and classifications of museum. What is the function of a museum? Why is a museum there? The museum is basically for community education by preserving history, by preserving art, and by arranging the art and the history in a way that enhances its appeal, that enhances and gives depth to its meanings. So the purpose is to link past, present, and future, to capture time. Peculiarly, most museums where there are exhibits and sculptures and paintings do not have windows. Those rooms do not have windows. The reason they don't have windows is the following.
that to have windows, if there was, where Yakshini was, now there was a window. What that does is, now I might look outside the window. I might see a scooter going by, a car going by, a Maruti. Now, that has ruptured the magic of the time. And that has put me and fractured my experience. The exhibits are almost always in windowless rooms. The reason they are windowless is to emphasize that this is it. This is it. There's no time passing by. There's no other thing. This is it. There is a quality of eternity bestowed upon the displayed object by the absence of windows, by cutting off the external world altogether. You are supposed to be only here, seeing only this thing, only in this era. This is the time. It is in this time that you live. That is one very important thing. The walls are generally blank and not intrusive. The walls are simply there to provide a background. And the great photographer, or at least famous photographer, or at least well connected to an important family photographer, roughly same things. You know, Lord Snowdon, who was married to Queen Elizabeth's sister, he had said something very interesting about a background. He says, what is a background? He was a photographer, so he knows what's a background. What is a background? What a beautiful definition he gives. A background is something that is just this side of nothing and just this side of something. Just this side of nothing and just this side of something. That is called a background. And the walls in a museum provide that kind of background. As a psychoanalyst, we consider the wall as the mother's arm in which the baby is located. Because a mother has two relationships with the baby, holding and relating. Relating is talking, smiling, looking at the baby, feeding from the breast, feeding with the hand, pinching his cheeks, laughing, that is relating. But meanwhile, this arm is holding the baby. And if another child, another older sibling pulls this arm, the mother says, wait, puts the baby this way, give this hand to the other child. Holding is necessary for relating. That's also pertinent in medicine. Yesterday I was giving a talk, and one of the things I said, when we give bad news to people, and as doctors we have to often give bad news, we must never give bad news while standing up. We should sit down. Why? Because a standing up person stirs up the anxiety of the potential of his leaving. A sitting down person appears more permanent. And bad news is something that has to be digested. And there are other rules about giving bad news. But holding the patient is first. Relating is later. I'm walking inside a mental hospital ward, patient comes, can I have a pass? Can I go visit my mother? And suppose I'm walking fast. I say, listen, I'm going to talk to the nurses, I'm doing some work, I can't answer this question now. I'll come back 3-4 minutes, it'll take me 5 minutes, I'll come back, we'll sit in a room, then we'll talk. And then I take him, I said, I have only 4 minutes. But for these 4 minutes, I'm all yours. Tell me what were you saying? By closing the door, by sitting in the room, by telling him I have 4 minutes, by saying I'm all yours in these 4 minutes. This is holding. Now we'll do relating. The walls in a museum are the mother's arm. The window is the father's prohibition not to be distracted. That is how a museum is created. Now there are lots of museums in the world. The first museum was created around 3,000 years ago in the city that my beloved country, now my second country, has destroyed. And that is Baghdad in Iraq. Then second museum in Cairo in Egypt. And then so on and so forth.
In the modern history, these are like thousands of years ago. In the modern history, the first museum was created in Dresden, unfortunately, another city which was destroyed in the World War II. The 5 largest museums in the world are Louvre in Paris, Hermitage in St. Petersburg, Museum of Natural History in Washington, Metropolitan Museum of Art in New York, and the British Museum in London. These are the 5 largest museums. That doesn't mean that they're the best museums. They're just the largest museums. In fact, in England, if you go, I think the National Portrait Gallery is the most fun place to go, and so on and so forth. One of the purposes of the museum is cohesion and pride within a community. We are Indians. This is Indian art. We have a history. There's a texture, there's a meaning. We were able to think deeply. We don't have to get seduced, as Vinay Saab said, by quick WhatsApp and internet things. There's more to think about things. And it is inherent in our art, in our sculpture and such. But a museum creates that we-ness in us and a sense of pride, even though sometimes it's associated with pain, like the Holocaust Museum in Washington, D.C., like the Museum of African American History in Washington, D.C. Immensely painful to watch, terribly disturbing to go, but nonetheless important, profoundly important. India, I wrote in Times of India about almost 15 years ago, 20 years ago, an op-ed page that India needs a great museum of partition. Because partition has all kinds of myths. Everybody, you can ask 5 people, everybody has a different idea why the partition happened. We cannot agree on this. So if we, the children, will not agree, then our parents should take responsibility to teach us about it and teach us not lies but facts. So that I think the extremely important thing that's missing is a great, significant museum of partition of India. These are my factual thoughts, which to most people here who know about museums are rather elementary and nothing to be so proud about and nothing to be so amused by. These are basic elementary facts. I'm a doctor and I'm a psychoanalyst. So I'm more interested and more knowledgeable, not in museums that exist outside. You are expert in this. You are expert in this. I'm interested in museums that exist inside of us. 3 things come to mind about it. One is, first of all, amazing thing. This is an uncanny thing. When you start researching something, when you start writing about something, the thing appears. Just today, 1 hour ago, I looked at my phone and a news item appears where the great film actor, Al Pacino, the great Hollywood actor, he was giving an interview and he said that there are certain movies that were offered to him and he didn't take. And then he says, there is a museum of regrets in my mind. This is a phrase he used. I just found it like about an hour ago. There's a museum of regrets in my heart. All of us carry museums. Let us talk a little about marriage. What is marriage about? And what is it for? From biological perspective, marriage is for producing children. Chalo theek hai. 2 people can take better care of a little child who's born so dependent and such.
Yes. Sex? Yes. I think in some societies that's the only way to have sex, in some societies that's not the only way to have sex. Chalo, sex bhi theek hai. But what is marriage really about? And what actually sustains the marriage? Only two things, I think. Conversation and memory. Conversation and memory. Let us suppose I come here alone, without my wife. Now I say, I gave a talk in this beautiful space, amazing, beautiful walls, good people, attentive audience, and the museum building was gorgeous. So my wife may say, yes, that's very interesting. She may be polite, show me a picture, something. Baat khatam ho gayi. But let us suppose 2 people come here. Now, this thing will remain with us. So, 6 years from now, 10 years from now, 15 years from now, we remember when we get to the Bihar Museum. And I think that day Vanessa was wearing a blue jacket. No, he was not wearing. He was. And remember when we entered the left side. Now we are talking. It is a jar in which a couple writes down memories and throws. And that jar gets fuller and fuller, to which we return again and again, like cattle to a river to drink water. That is what this is about. See, we are born in our grandparents' minds and we die in our grandchildren's hearts. That is the length of a life of a regular person. That is the length of our life. It's all about sex, money, house, car. These are accoutrements. These are glues. A stamp may have glue on its back. And it may need an envelope. But the envelope is not a letter and a stamp is not a letter. It's the letter that matters. Sex, house, money, car, they are just accoutrements within which is permitted a dialogue, an ongoing dialogue, an ongoing collection of memories. And the two feed each other. Memory and dialogue, dialogue and memory. That's what life is about. So, inside of us, there are museums of love and museums of hate. One hopes that the museums of hate are not getting much audience and their tickets are not selling and too many crowds are not going there. And the museum of love is well attended and well decorated and well kept and well preserved. And more acquisitions are made in that. We make new friends. I think Vanessa and I are friends, but we are friends now for what? 12 years, 10 years? Do you see? We acquired each other. By that, for the museum inside of me of love, I acquired another object. Acquisition, preservation. Friendship is not a dead thing. Friendship is like a plant. You have to clean it. You have to put water in it. Only then, when you clean and give water to a plant, the plant will return a flower to you. Same thing is with friendship. It's not one-sided business. It's two-sided business. Acquisition, preservation, interpretation. What is he to me? What am I to him? How come I have him in my life? How come he has me in his life? What's going on? Interpretation, preservation, acquisition, interpretation, display. And through that, education of friends, of our children, of our colleagues. Inside us, there are museums of love, memories of good people, memories of people who have been good to us. And if we consider our inner self like a coffee table on which there are some objects, if we clean the coffee table and put the objects nicely, the coffee table says to us, I'll make your house look good. Same thing, if we keep the memory of good people, think good thoughts about them,
call them, do something about them. They love us from inside of us. Same way, the museums of hate. There are some people who hold grudges. They remember that day you had promised me you'll come, and meet me, and you never came. That day was in 1972. For God's sake, grow up. But some people cannot let go. So a friend of mine, Justin Frank, he's a psychoanalyst in DC, he said such a smart thing. Please understand, I'm like a stamp collector, I'm not a plagiarist. There's a difference between a collector and a plagiarist. I'm not owning this idea because it's so good idea. He said that there's a phrase in English called nursing a grudge. Nursing a grudge. He says it's not about grudge, it's about nursing. Because the person has now turned that injury into a black breast from which he's sucking the milk of hatred and thriving on hatred. So people carry all kind of museums inside of them. That is one thing. Museums of love and museums of hate, both are inside of us. Because all of us have been hurt sometimes, all of us have been betrayed sometimes, of course. But hopefully, we will have the museum of love inside, bigger, fancier. We give more money, more donations to the museum of love inside than we give to the museum of hate. And acquire better items for this than for that. That is one psychological aspect. The second psychological aspect is that a dream is a museum itself. मैं अगर ख्वाब में भटकता हूं, फिर ये बिस्तर पे सो रहा है कौन? So we are split in two parts. We leave our bodies and we go someplace. The same thing that happens when we are standing in front of a statue, just like they were kind enough to let me see this statue, great statue Yakshini. Then only two things are allowed there. Not my hands, not my feet, not my abdomen, not my chest, not my ears. Only two things, eyes and mind. It's a disembodied experience. Same thing in the dream. You have to leave the body behind, and now you go in another world. So you're safe, you're not doing anything, but you can do anything. That's a paradox. The dream is a museum itself, in which we see old things, we see surprising things, we see things that were never put together. Just like in a museum, two paintings are put together and they become a different meaning. Same way, you see your uncle who lives in Calcutta, but you see him, he has never been to Patna, but you see him in Patna. Or you see that you and your uncle are in London. He has never been abroad. But London has some meaning for you, uncle has some meaning for you. You put them together, a new thing happens. The dream is a museum in itself. We visit a museum each night 4 times. There's a triangle, I mentioned it yesterday also, between 3 things. Dream, poetry, and psychosis. Serious mental illness. These 3 things are connected. Poetry is good madness. Madness is bad poetry. Dream contains both poetry and madness temporarily. These are similar phenomena. Because we get tired of living in reality. To make money, to buy groceries, to make sure that the car is working and it has petrol, to pay taxes, to go buy shirts. This is a boring life. So we need some entertainment. That's why every place has intoxicants. I know there are some places where intoxicants are banned, but really? Come on. Every place. The funniest thing is, I went to Tehran and Mashhad in Iran. And second day, somebody asked me, would you like a drink? Second day. So I said, yeah, okay.
if it's not a difficult thing. And they said, of course not. They went their home and they opened cabinet and they're full of scotch, wine, everything. What would you drink? So I asked the person, where did you get this from? He said, I don't know. I said, what do you mean? He says, I don't know. I said, there are no shops? He said, no shops. So I said, then how do you obtain it? He said, well, the driver brings it. Now, this is a name for a great documentary. Movie documentary, a book, a poem, a museum exhibit, the driver brings it. I heard this from Pakistanis. I heard this from an Indian friend who sent me a picture drinking scotch in Riyadh. And I wrote to her. I said, where are you? She said, in Riyadh. I said, and you have a bottle of Chivas Regal sitting next to you drinking scotch? She said, everybody does. And where did you get it from? The driver. I've never been to Pakistan. One of my cousins moved to Pakistan, so I was a little disturbed by that. Anyway, so he said, come visit me. I said, okay, I'll think about it. I wasn't going to go. So I said, suppose you pick me up from airport and I say, can I have a drink? She says, of course, you'll have drink. I said, can we stop by and then I can look and pick something? He said, no. We'll go home, have a drink. So I said, you have alcohol in your house? She said, plenty. I said, where does it come from? She said, the driver brings it. The driver brings it. That's how it is. The driver brings it. People don't want to know where it's come from. And that's what happens in dreams. We do things, that's a proxy action. सुबह उठे तो हमने तो कुछ किया नहीं है, वो तो हो गया. But the dreams are necessary. The dream is a guardian of sleep. We dream so that we can stay asleep. We need intoxicants so that we can bear the reality. Reality is hard and annoying, difficult, and boring and taxing. That's why every society needs intoxicants. Okay, so the first thing is, psychologically, the museums inside us. Second is, the second thing is, one is the museums inside us. Second is the dream as a museum. The third thing is creativity that is stirred by going to museums. Now here's a clear example. My friend, Dr. Vinay Kumar, he saw this statue and he was so moved by this statue, he wrote a poem. But he realized that has not captured everything. So he wrote another poem. Then he wrote another poem, and gradually it became a whole book of poetry, a significant book. Museums can cause people to become creative. W.H. Auden, the great British-American poet, has a fabulous poem called Objects. That's a great poem. Thomas Hardy has a very nice poem. And an Indian person whose name is Daljit Nagra, a Punjabi person who is in London, has a fabulous poem about the British Museum and how many stolen objects are in British Museum. Fabulous poem. So, the museums have functions that touch us, and they bridge past and present. They bridge finiteness and eternity. They bridge body and mind, and they present materials in a way that causes us deep experience of thinking. A corollary, a parallel example is reading a poem and listening to a poem. Reading a poem is like taking steroid pills for arthritis. Listening to a poem is like getting a joint injection directly in the joint. It goes straight to the unconscious, from the poet's unconscious to the audience unconscious. So now I'll come back full circle. What happened next? As the patient is lying on the couch, completely still, unmoving, and I have a fantasy that maybe she's dead.
And I look, and she's breathing. So I'm realistically and factually relaxed. But this thought has occurred to me. And I'm not a fool. I'm not a psychotic. I'm not demented yet. Who knows? Who knows? पूरा तो आप भरोसे से नहीं कह सकते ना. मैंने कोई खून भी नहीं किया है अब तक. ये बात याद रखिएगा. I have not committed murder so far. आगे का तो पता नहीं है. पेशेंट पूछता है, कोई ऑब्नॉक्सियस पेशेंट, आप पेशेंट से पूछें, आर यू फीलिंग सुइसाइडल? वो कहता है, व्हाट अबाउट यू? हैव यू फेल्ट सुइसाइडल? मैंने कहा, एवरी ह्यूमन बीइंग फील सुइसाइडल, बट in the acute and self-dangerous way. In that way, I have not felt it so far. So far. किसी को ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमें बुखार नहीं होगा जिंदगी भर, या हमें कोई हमारी हड्डी नहीं टूटेगी कभी. ये कैसे हो सकता है? इंसान है, कुछ भी हो सकता है. So, I'm relaxed, but I'm also thinking now, why did I think she is dead? Simply because she was quiet? Simply because she was not moving? No, there's something else. And then, why this memory of the mummy came to me? Aha! So now I lean forward and I say the following to the patient. Let me ask you a rather awkward and strange question. Can you recall any time in your early childhood where your mother or your father tried to kill you? And the patient begins to cry. Now the patient begins to weep and sob and weep. And then she reveals that indeed she was threatened by the mother with a pair of scissors on the neck. I'll kill you if you do this. And this happened many times. So, see, the unconscious and the unconscious, two people communicate. People don't only communicate with words. People communicate with eyes, with hands, with the way they sit, with the way they move. Silence is not against language. Silence is a form of language. Love can be expressed by silence. Love can be expressed by words. Hate can be expressed by silence. Hate can be expressed by words. Respect can be shown by silence. Disrespect can be shown by silence. Silence is just a way of communication. She had communicated to me that there's a murder going on here. A murder has taken place. Somebody has been killed. She was also saying, don't kill me, I'm already dead. And so on and so forth. But the memory of that museum visit as a child helped me then, although at that time it was traumatic and disturbing and disappointing as a child, today it became a useful ally of my clinical work. George Braque, the great Cubist artist and a good friend of Picasso, has said, art is a wound turned to light. Art is a wound turned to light. And that's why that trauma of 8 years of age, of disappointment of not seeing the mummy, that was the wound that got turned to light by use in the clinical work and informing me of what is going on. Now let me conclude by a poem that I wrote about half an hour ago. The poem goes like this. वक्त के बड़े छोटे कारवान जिसमें हैं, वक्त के बड़े छोटे कारवान जिसमें हैं, अजनबी भी हैं जिसमें, अजनबी भी हैं जिसमें, हम ज़बान जिसमें हैं, याद के तमन्ना के सब निशान जिसमें हैं, यकीन भी जिसमें और गुमान जिसमें हैं, एक मकान ऐसा है 100 मकान जिसमें. थैंक यू.
बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अख्तर साहब। बहुत ही नई, दिलचस्प और बहुत ही समृद्ध करने वाली बातचीत रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस अच्छी बातचीत के लिए एक बार ज़ोर से ताली बजाकर हम लोग इनका स्वागत करें। बहुत ही दिलचस्प। अब अंजनी कुमार सिंह जी और अमीर सुभानी साहब है, मैं चाहूँगा कि अगर दोनों कुछ करना चाहेंगे तो ज़रूर अपनी कुछ टिप्पणी रखें। अंजनी बाबू। आज के वक्ता और मुख्य अतिथि जनाब सलमान अख्तर साहब, यहाँ मौजूद सभी महानुभावगण, बहुत दिनों की प्यास बुझी लेकिन रह भी गई। मन कर रहा था कि सुनते जाएं, समय ख़त्म हो जाए, डॉक्टर सलमान अख्तर साहब की बातें ख़त्म ना हो। और साइकेट्री का दायरा भी कितना फैला हुआ हो सकता है। कोई ऐसा विषय नहीं है इस संसार में जिसका संबंध साइकेट्री से न हो। और एक अच्छा डॉक्टर चाहे किसी भी ब्रांच का हो या कोई भी विद्वान हो, कोई भी इंसान हो, उसका इल्म तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसको थोड़ी सी भी साइकोलॉजी की, साइकेट्री की, ह्यूमन माइंड की समझ ना हो। तो ये सारी बातें हमें आज ज़्यादा समझ में आई डॉक्टर सलमान अख्तर साहब को सुन करके। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी जादुई तकरीर फिर कभी, लेकिन बहुत जल्द, या कम से कम मुझे अपनी इसी ज़िंदगी में सुनने को मिलेगी। हालांकि अब मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी रह गई है। शुक्रिया। अंजनी कुमार सिंह जी। आदरणीय सलमान अख्तर साहब, आमिर, विनय जी, दोस्तों, पहले जब विनय जी और अशोक मेरे पास आए थे कि एक डॉक्टर साहब अमेरिका के आ रहे हैं और उनका एक लेक्चर होना है बिहार म्यूजियम में, तो पहले हम लोग के दिमाग में मेंटल ब्लॉक होता था कि डॉक्टर और इंजीनियर बहुत सूखा, ड्राई, वो क्या आर्ट और कविता और इस पर, क्योंकि बिहार ये संग्रहालय तो कला के लिए है, माने कला बड़े रूप में जिसमें सब कुछ है, म्यूजिक है, भाषण है, सब कुछ है। तो फिर हम लोग का टॉपिक बना ये म्यूजियम के बारे में। तो एक तो बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, फिर बाद में लोगों ने बताया कि नहीं डॉक्टर जितने अच्छे हैं उससे अच्छा उन्होंने लिखा है, भाषण दिया है, बहुत सारे इनके यूट्यूब पे और बाकी जगहों पर भी इनकी बातें हैं, तो सुना जाए। लेकिन आज जो मैं इनकी बात सुन रहा था मुझे बहुत मज़ा आया। मेरा बहुत फेवरेट कवि है कबीर। जैसे उनका 2-2 लाइन का वो होता है, लेकिन उसमें इतनी सारी बात और गंभीरता और गूढ़ता होती है, ऐसा ही लग रहा था कि इनका टुकड़े टुकड़े में उसी तरह से आ रहा है। धारा प्रवाह में हम लोग सुन तो गए, लेकिन लगता है कुछ देर अभी दिमाग को और काम करना होगा कि किसका क्या मतलब, क्या इंटरप्रिटेशन है और क्या हो सकता है। और दूसरा, जितने सरल ढंग से इन्होंने बताया, इतने सरल ढंग से बताया कि ऑलमोस्ट कोई गैप नहीं रहा। नॉर्मली क्या होता है कि जब बहुत विद्वान आदमी आते हैं, जब बात करते हैं तो एक गैप हो जाता है, क्योंकि उनका अनुभव, उनके बोलने का तरीका, उनका दुनिया का अनुभव और हमारे श्रोता, एक गैप होता है। तो भाषा इतनी सरल और अच्छी थी और बातें इतनी लग रही थी कि हाँ हाँ ठीक ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है या हो सकता है। ये बहुत 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 एक बिहार संग्रहालय में अभी तक जितने भाषण हुए उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक होगा ये भाषण। देखो, मैं तो ये भी मान दो, खैर म्यूजियम पर पहले बता दूं कि अब क्या हो गया है, म्यूजियम की एक लंबी चौड़ी डिफिनीसन भी है, लेकिन हम लोग बिहार म्यूजियम केवल एक बिल्डिंग और आर्टिफैक्ट नहीं मानते हैं। चीज़ें हैं, डिस्प्लेड हैं। वास्तव में यह कला केंद्र के रूप में ये विकसित हो रहा है, जहाँ सारे लोग आते हैं, बातचीत होती है, नए आइडियाज़ आते हैं। और हम लोग, जैसे मैंने यहाँ एक संस्था बिहार में शुरू की थी, किलकारी, वहाँ 2 नियम बनाया था। वहाँ पहला नियम था कि यहाँ पढ़ाई नहीं होगी और दूसरा नियम था कि यहाँ वही होगा जो बच्चे चाहेंगे। प्रॉब्लम क्या हो, ज्ञान इतना हो गया है ना कि ज्ञान
हम लोग वो कौतूहल और अनुभव करके सीखना और जानना, सुनने से बहुत सारा इग्नाइट होना, फिर उसको समझना, वो ज़्यादा बेहतर है। हो क्या गया है आजकल, इतना ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ है ना, अब तो मेरा बहुत टाइम जाता है 80% की क्या ज्ञान हम नहीं लें, इस पर बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि वो ज्ञान नहीं लें। और म्यूजियम का भी अभी बहुत अच्छा हो रहा है दुनिया में। क्या हो रहा है, म्यूजियम हर चीज़ का होने लगा, बहुत सारे म्यूजियम और वर्चुअल म्यूजियम है। एक भगवान बुद्ध पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो वर्चुअल म्यूजियम है। पूरे दुनिया में जो भगवान बुद्ध से संबंधित जितनी कलाकृतियाँ हैं उनको वर्चुअली एक जगह लाया जा रहा है। फ्यूचर में हो सकता है वैसा हो। आजकल लोग म्यूजियम ड्रीम का बनाते हैं, कोई अपने घर को म्यूजियम कहता है, और म्यूजियम तरह तरह के हो गए। वैसे आपको एक खाली सूचना दे दूं कि एक अपने हिंदुस्तान में एक पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर में बहुत सुंदर बन गया है। इट्स ए गुड म्यूजियम। हाँ, वो एक अच्छा म्यूजियम है। तो यहाँ पर हम लोग गतिविधि और एक्टिविटी और लोगों को जान, लेकिन हमारा अभी भी स्ट्रांगली मानना है कि लोगों को केवल थोड़ा कबीर के दोहे की तरह या इनके बातों की तरफ देना चाहिए और सोचने के लिए उसका अपना अनुभव। इसलिए हमारा जो चिल्ड्रन सेक्शन है, बच्चों वाला जो एरिया है, वहाँ पे हम लोग इनकरेज करते हैं कि आप प्लीज़ टच, प्लीज़ एक्सपीरियंस, प्लीज़ फील, क्योंकि उससे जो सीखता है कि वास्तव में खुदाई कैसे होती है, वही हम वहाँ दिखाना चाहते हैं। तो बात उसको कोई बहुत बड़े प्रोजेक्शन से और फिल्मों से और इस तरह से और किताबों से बताने के बजाय हम लोग बोलते हैं छू के देखो। अगर 1000 साल पहले अगर खुदाई होती तो क्या मिलता, 800 साल पहले क्या मिलता, 500 साल, और अभी खोदोगे, अभी खुदाई करोगे तो क्या मिलेगा। तब जो बच्चा एक्साइटेड होता है, उसका दिमाग जो काम करता है बहुत अद्भुत होता है। फिर लेयर्स कैसे होते हैं, तो वो विजुअली जब वो देखता है उस चीज़ों को। यहाँ हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की का एक चीज़ हो, लोग आए। और इसलिए हमारा जो एक स्टाइल भी है बिहार म्यूजियम का, स्टोरी टेलिंग का है। हम लोग कहानी कहते हैं कि सभ्यता से ऐसे विकास हुआ, फिर अशोक आ गए, फिर ये हुआ, भगवान बुद्ध आए, अशोक आए, महावीर आए, फिर कैसे फिर मुग़ल काल आया, फिर उस समय क्या क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने क्या किया। तो एक कहानी आपको नज़र आएगी यहाँ। और हमारे दीवालों का भी रंग उसी तरह बदलता है जैसे उस समय का पीरियड बदलता है। तो आज तो हम इतना चीज़ आपसे सुने हैं कि पहले तो उसको हम कितना बात करना होगा लोगों से, और उसको फिर उसके अर्थ को निकालना होगा। बहुत आई थॉरली एंजॉयड, आई एम ग्रेटफुल आपने यहाँ के और हम सभी का। और आज यहाँ पटना के करीब करीब सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपने सबका बहुत ज्ञान बढ़ाया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी कुमार सिंह जी। दोस्तों, लगभग हम लोग अंत की तरफ आ गए हैं। इतनी अच्छी बातचीत रही म्यूजियम के बारे में। उन्होंने कहा कि म्यूजियम रचनात्मक बनाता है, सृजनशील बनाता है। ऐसा ही कविता के बारे में कि पोएट्री इज ए गुड मैडनेस, मैडनेस इज ए बैड पोएट्री। बहुत ही अच्छी बातचीत। एक बहुत ही दिलचस्प बात इन्होंने कही कि संग्रहालयों में खिड़की नहीं होती, म्यूजियम में मतलब खिड़की नहीं होती। क्यों? तो मान लीजिए कि यक्षिणी में आप 2000 साल पहले की चीज़ देख रहे हैं, एक खास कालखंड में आप ठहरे हुए हैं, और बगल से खिड़की से आप देखते हैं कि कोई वर्तमान की चीज़ जा रही है, तो टाइम का सेंस भंग होता है। ऐसे ही म्यूजियम के बारे में कैसे ख्वाब म्यूजियम है, ऐसे बहुत सारी विवाह के बारे में इतनी अच्छी बात की कि वो संवाद और स्मृति 2 पायों पर टिका है। ऐसे बहुत ही समृद्ध करने वाली बातचीत थी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अख्तर साहब। और ये बातचीत विनोद अनुपम जी आएंगे, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। सलमान अख्तर साहब का एक जो लेख आया करता था, विनय कुमार जी अपनी पत्रिका निकालते थे, तो जिस साल इनका एक लेख आया उसमें उन्होंने एबनॉर्मल लोगों के 10 लक्षण बताए थे। ये लक्षण है, ये लक्षण, तो 10 लक्षण थे, उसमें देखे कि 8 लक्षण मेरे अंदर भी है। हाँ, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब लगता है कि 10 में 8 है, कुछ दिक्कत है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो, हम सब लोग साइकेट्रिस्ट लोग मानते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच एक बड़ी बारीक रेखा रहती। कई बार आदमी दिन में टप के एबनॉर्मल जोन में चला जाता है। दिक्कत तब होती है कि इधर आता ही नहीं, तो यही दिक्कत। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही दिलचस्प बातचीत रही। सलमान अख्तर साहब, विनोद अनुपम जी आए अपनी बात रखें। धन्यवाद अनीश जी। ये जैसा कि अभी
अंजनी राव ने कहा कि अभी दिमाग को बहुत काम करना बाकी है, ये व्याख्यान अभी समाप्त नहीं होता है। तो वाकई व्याख्यान और आपके बीच में हम आना नहीं चाहते हैं, और आप सब यहाँ आए। सलमान अख्तर साहब की व्यस्तता हम समझ सकते हैं इनके परिचय से ही, और इन अपनी तमाम व्यस्तता के बीच उन्होंने पटना के लिए हमारे लिए समय निकाला और इतनी अच्छी बातचीत से हमें समृद्ध किया। हम सब उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बिहार म्यूजियम ने हमें सुनने का अवसर प्रदान किया। अंजनी राव की सौहार्द हम सबको मिलता रहा है। इस कार्यक्रम में वो उपस्थित रहे, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। अशोक कुमार सिंह जी, आदरणीय अमीर सुभानी साहब, डॉक्टर विनय कुमार की परिकल्पना हमेशा कुछ अद्भुत होती है और पटना के लिए हमेशा कुछ नया लेकर के आते हैं। इस बार भी वो नया लेकर के आए हैं। और आप सब, जब भी पाटल परिवार आप सबको आमंत्रित करता है अपने साथ कुछ साझा करने के लिए, आप सब की उपस्थिति हमें उत्साहित करती है। आप सब का बहुत बहुत आभार। हम बहुत जल्द फिर आपके साथ होंगे किसी नई बातचीत के साथ, नए विचारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।